guys, welcome back to my channel and welcome back to brand new video of mine. So today video is like a day in my life when I'm not traveling. So I will be taking you through my day, how I start my day, what I do in a day. So the video is basically a day how it's spent in at a home when you're not traveling, because obviously आप महीने में सिर्फ 5-10 दिन ही जा सकते हो ट्रैवलिंग के लिए, उसके बाद यू हैव टू बी एट होम. सो बेसिकली that thing is only about. So if you're new to my channel, don't forget to hit on subscribe button, and अगर पहले से आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो I thank you from bottom of my heart for showing your love and support. And if you like the video, you have to hit on like button, and you can follow me on Instagram also. I will link it in the description. No, you don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned Let's it. start with a brand new day and with lot of hope and gratitude, because for me gratitude is really a morning routine of mine. So I always show gratitude whenever like I'm waking up. I usually wake up by 7:30, last 8 o'clock, but today I'm little late. So it's really late, so I have to get started with my workout also. I'm not a person who does morning workout, but now I'm changing my habits and I have started doing morning workout. I'm really thankful to Healthify Me, because after taking their subscription and their plans, I have started working out in the morning. I have to do that workout because I have to log, and my coach needs to see, and if I don't work out then message will be dropped, why you're not working out. So let's get started with today's workout. So basically in Healthify Me app, they have a workout plan for you for every day. So you have to do that sets accordingly जो आपके trainers बताते हैं. So it is like updated for 1 week, and after 1 week it does changes. So I have to start with it. It's like approx 50 or 1 hour workout. If you can see, a lot of exercises are there. I just follow instructions here and just do the workout. So let's get started with this first. Ain't even worth it. Ain't even worth it. After doing workout, I do meditation for 10 minutes. But आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, so I'm thinking कि freshen up होके and after doing breakfast, should I do the meditation? But I know after breakfast I will not be able to get time to do meditation. So it's better if even for 5 minutes I can do right now. So I'm just thinking कि कर लेती हूँ 5 minutes की और बात है, because बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस रूम में. So just let's see. I will do the meditation. Circles lost and found. Done with my morning routine. Workout is done, meditation is done, and indeed it's a good start of the day, because I was missing my workout when I was traveling. I tried doing as much as I can, and I've just started. When I'm back to my home, I have started again with my workout. So now it's a good morning. I will go down and freshen up little, then make my breakfast, because after workout and breakfast is like a main meal for start of your day. So that need to be done. Most of the time I'm making my breakfast myself. So let's see what breakfast I will be making today. So let's get start, because it's already late. I generally do my breakfast by 10. अभी 9:59 हो चुका है. So I'm running little late today because I don't know what I was doing, but I'm really late. So let's go and make breakfast first. A few moments later.
my breakfast is ready. It's like a lot of veggies into this sandwich. I'm going for only one sandwich. That's like enough for me क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे vegetables है, like sprouts, paneer, and a lot of vegetables. And I'm just like starving to have this. So let's go and have our breakfast. I always prefer to have my breakfast with coffee. So ये रही मेरी coffee, and today I made it with oats milk because I am thinking to try non-dairy milk. So this is my trial for oats milk. I'm just being honest. You haven't I'm done with my breakfast and now I have to clean my room क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है मेरा रूम. And the second thing is I don't remember मैंने अपनी बेडशीट कब चेंज की थी लास्ट, क्योंकि ध्यान ही नहीं कब मैंने लास्ट की, तो वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, तो वो मुझे क्लीन करना है. एंड रूम इज़ रियली मेसी राइट नाउ. आई कैन शो यू कि बहुत गंदा है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वर्क, फिर देखते क्या करना है और आगे आज. ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this. Ain't even worth सो फाइनली द रूम इज़ डन. और आपने टाइम स्लैब देखा ही होगा कि कैसे किया है मैंने पूरा रूम क्लीन. एंड रियली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको क्लीन करते करते क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था. एंड इट वॉज़ लाइक मैंने बहुत टाइम से क्लीन किया ही नहीं था. नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक टूर ऑफ माई रूम कि कितना क्लीन और नीट लग रहा है. सो लेट मी गिव यू दैट. it. Goes in circles round and round. Loving you goes in circles lost and found. तो अभी बिफोर स्टार्टिंग विद सम वर्क, क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी है, तो मैं सोच रही हूँ कि लेट्स रीड अ बुक 2-3 पेजेस, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो चुका, बहुत टाइम नहीं, मतलब 2 दिन से मैंने अपनी बुक कंटिन्यू नहीं की है जो मैं पढ़ रही हूँ रिसेंटली. तो आई एम थिंकिंग कि लेट्स रीड 2-3 पेजेस ऑफ बुक एंड देन स्टार्ट विद माई वर्क. लेट मी शो यू which book I am reading currently, and it's like highly recommend, one of the best book I have ever read in my life. So this is one of that. Let me show you. So this is the book which currently I'm reading, Lozzie Hey You Can Heal Your Life, and it is international bestseller. Actually I was looking some good book and I don't know, luckily or unluckily Amazon recommended me and I was like I have to get this. And after reading it I'm like really, it's like you should read this book once in a lifetime if you are feeling low or if you have lost your like motive in your life, then this book is definitely for you. So let's grab this and read some pages of this. Loving you goes in circles round and round. Loving you goes in circles lost and found. After reading book, now it's time to do some work. तो अभी I am right now doing that only. I am transferring my videos जो मैंने अभी रिसेंटली शूट की थी ऋषिकेश एंड धनौल्टी में. व्लॉग विल बी कमिंग सून, सो आई हैव टू एडिट दैट. तो अभी मुझे थोड़ा सा बस काम ये ट्रांसफर वीडियो हो जाए, देन आई विल बी स्टार्टिंग विद एडिटिंग. एंड लेट्स सी व्हाट्स मेड फॉर लंच टुडे. एंड देन इट्स 4:30 एंड टाइम टू गो फॉर जिम. तो मैं मोस्टली जिम नहीं करती, मैं पिलाटे क्लासेस के लिए जाती बिकॉज आई एम रियली फैसिनेटेड बाय पिलाटे क्लास. दिस इज़ माई फर्स्ट मंथ ऑफ पिलाटे क्लास. तो मेरी अप्रॉक्स 5-6 क्लासेस है, बट आई एम लविंग द वर्कआउट ऑफ पिलाटे क्लास. तो अभी उसी के लिए जाना है. सो लेट्स गो देयर. Ain't even worth it. No, you don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned it. Ain't even worth it. You don't deserve it. I'm just being honest. You haven't earned this. Ain't even worth it. Ain't even worth it. I'm back from my Pilates class and it was really वर्कआउट. और मेरी हालत देख के आप देख सकते हो, पूरे बाल वगैरह अभी तक मेरी थकान नहीं हटी है बिकॉज बहुत ज़्यादा आज लाइक रियली हाई साइड पिलाटे क्लास आई डिड. एंड अभी आई एम गोइंग टू चेंज माई क्लोथ्स एंड देन लेट्स सी व्हाट्स द प्लान फॉर डिनर.
क्योंकि मुझे वो भी देखना है कि मेरे को डिनर में क्या बनाना है, क्योंकि मैं अलग खाती हूँ और मेरे घर वाले कुछ और बना रहे होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट आई विल बी मेकिंग फॉर डिनर ऑल्सो एंड व्हाट्स द प्लान कि आगे क्या करना है. बट पहले चेंज कर लेते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है मुझे एंड आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस स्वेटी क्लोथ. सो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद. It's dinner time and we are decided with our dinner. We are going to bake pizza. Obviously, I'm not going to eat pizza क्योंकि मैं खिचड़ी खा रही हूँ. मम्मी ने खिचड़ी बनाई है तो मैं तो वही खाने वाली हूँ. बट माई कज़न स्टेज विद मी तो उन्होंने बोला हमें तो पिज़्ज़ा ही चाहिए आज. सो आई एम गोइंग टू बेक दैट फॉर डिनर टुडे एंड उसी के लिए मैं किचन में हूँ एंड आई विल बी लाइक स्विचिंग ऑन द अवन और प्री हीट करना है उसे. देन उसमें पिज़्ज़ा बेक होने के लिए डालेंगे. ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट फ्रॉम स्क्रैच. इतनी क्षमता नहीं है मेरे अंदर कि मैं उसे स्क्रैच से बनाऊँ. सो एवरीथिंग इज़ रेडीमेड एक्सेप्ट चॉपिंग ऑफ लाइक वेजिटेबल्स. वो मैंने किया है. सॉस हुआ, बेस हुआ, सब कुछ बन गया है. बस उसे बेक करने डालना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड और बनाते हैं पिज़्ज़ा. आप भी आ जाओ मेरे साथ और लेट्स मेक यमी यमी पिज़्ज़ा एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि कैसा लगा आपको ये पिज़्ज़ा. सो दीज आर लाइक टुडेज वेजिटेबल फॉर पिज़्ज़ा. हमें पनीर डालना था, वो हमें मिला नहीं. सो हम इसी से मैनेज कर रहे हैं. सो दिस इज़ कॉर्न, टमाटो, अनियन, कैप्सिकम और ये हमारी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है जो विबा की है. इट्स रियली टेस्टी. तो हम हमेशा यही लेते हैं. एंड दिस इज़ द बेस जो कि है इंग्लिश ओवन से आया, यू कैन सी है. तो बस यही है, इसको रेडी करते हैं. पिज़्ज़ा आर रेडी टू गो इन अवन. तो बड़े चीज़ी लग रहे. लेट्स पुट इनटू द अवन. प्री हीट हो चुका है ये, तो इसमें करते हैं एंड लेट्स बेक द पिज़्ज़ा टुडे. Done with my dinner and time right now is 10:35 and I need to say goodbye to this beautiful day. And also I am freshen up. I'm changing to my night clothes. I will be doing my night care routine also, which includes skin care routine, self love and everything. And I will be reading this book also जो मैं आफ्टरनून में भी पढ़ रही थी. तो मैं ये बुक अब भी पढ़ूँगी बिकॉज बिफोर गोइंग बेड आई प्रेफर टू रीड समथिंग. एंड आई विल बी राइटिंग ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो कि मेरी एक हैबिट बन चुकी है, राइटिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल every night. And little bit of skincare routine. Do let me know in the comment section if you want to see a night care routine of mine, a vlog, proper vlog. I would be very happy to shoot that. And do let me know in the comment section that also how you liked my day. I think you might find it little boring what I'm doing in a day, but this is usually I live my day. Because when you are at home and you're not a working person, you have this type of day only. If the persons who stay at home can relate to it कि आपका usually day कैसा होता है जब आप घर पे होते हो. I also do like workouts and editing my video and doing all the stuff for health and like this. मेरा journal workouts वगैरह ही होते हैं basically. So this is how usually a day is spent in my life. So do let me know how you liked it and if you want to see these type of videos in future also. And if you like the video, don't forget to hit on like button. अगर कुछ ना भी पसंद आए, do mention in comment section and where I can improve myself. Do let me know. So this is for today's video. See you in the next video. Till then, keep yourself healthy and safe. Bye bye. Good night.